Bidai ki China su khangdaba nangna ifamda karigi khangsinnaduna bidai pibinu themlamba. Nangtagi wahaida thajarabi ayhakpuna karigi piramliba China ase. Oihaure ngasidi China asina lakhatlabi singil. Luraba mitsna anisu pirangna thumatledo ngasidi. Khangkidre ko nahakdi piranga shigi mamal.
ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯉꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯆꯥꯅꯕ ꯅꯪꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯆꯦꯜ ꯑꯃ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯆꯦꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯉꯩꯒꯤ ꯅꯪ ꯑꯩ ꯃꯝꯂꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯔꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯪꯍꯧꯗ ꯃꯤꯀꯨꯞꯇ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯐꯝꯗꯒꯤ ꯃꯉꯥꯜꯗꯣ ꯂꯦꯞꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯔꯩ ꯑꯃꯗ ꯄꯟꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯉꯩꯒꯤ ꯅꯪꯕꯨ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯖꯗꯨꯅ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯪꯗꯤ ꯍꯜꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯋꯥꯁꯛ ꯀꯥꯎꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯍꯧꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯃꯥꯡꯅꯍꯜꯂꯕꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯪꯂꯥꯟ पुंसी अनिगी खेतनारा मरता आईना हिंहौ बनी नंगना आईगी पुंसीगी मंगलानी आईना नंगी आयुकी मंगलानी नंगना आईगी पुंसीगी मंगलानी आईना नंगी आयुकी मंगलानी पुंसी अनिगी खेतनारा मरता आईना हिंहौ बनी मंगलानगी हो आईबंदा नंगना आईगी पुंसीगी मंगलानी आईना नंगी आयुकी मंगलानी ममलबा थमोइगी काचिंदा ngaलंबनी नंगना थावमै ओइना ममलबा थमोइगी काचिंदा ngaलंबनी नंगना थावमै ओइना साफू कल्लाबा नोंलैना ममहनबिरमले मंगालदो ममहनबिरमले मंगालदो नंगना आईगी पुंसीगी मंगलानी आईना नंगी आयुकी मंगलानी थाजगनबी हो थमोइना थाजगनबी हो थमोइना नंगी नंगी लंबी तयेंगदुना ngaijaba लैंगोइदा ताबा खोंगुलगुम लैंगोइदा ताबा खोंगुलगुम मुथत पिरमले निंगसिंबा ममिदो मुथत पिरमले निंगसिंबा ममिदो नंगना आईगी पुंसी
ꯇꯥꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯁꯃꯨꯔꯥꯏ ꯂꯥꯠꯄꯝ ꯅꯇꯥꯁꯥ ꯁꯔꯃ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ KH ꯀꯟꯌꯥꯁ꯭ꯌꯥꯝ, ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯌꯨꯝꯂꯦꯝꯕꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯤ, ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯤ ꯍꯥꯎꯕꯝ ꯅꯤꯚꯥꯔꯥꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤ, ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯤ ꯁꯨꯅꯤꯇꯥ ꯅꯦꯄ꯭ꯔꯝ, ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪꯁꯤꯠꯅ ꯗꯥꯁꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ, ꯍꯨꯏꯁꯦꯟ ꯈꯨꯂꯥꯛꯐꯝ, ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯃꯤ, ꯍꯤꯗꯥꯝ ꯏꯕꯣꯆꯧꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯣꯝꯆꯥ ꯆꯤꯡꯈꯩ꯫ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ आकाशवाणी इम्फाल हौजिक अयुक्की पुंग 8 मखाई तारे मणिपुरीदा पाउ ताबिरासी। आकाशवाणी इम्फाल nganगom किरण पाउ पाजरी अहनबद मरुइबा पाउ मणिपुर ngasi धर्म की चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना सजिबु चैराउबुगी थोरम पांगथोकनारी सिक्योरिटी फोर्स न तोन तोन अहमसिंगगी खुसु खुलाई क्यामरुम फगतले लालहौबा अहमसु फारे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर ngasi संगारगनी मणिपुर ngasi धर्म की चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना सजिबु चैराउबुगी थोरम पांगथोकनारी कुमाई असना लाकपदा राज्यपाल मुख्यमंत्री अमदी लुसिंगब कयाना याइफा पाउजल पिरकली राज्यपाल अजय कुमार भला की पाउजल दहाई चैराउबना लाकपदा मणिपुर की मियामदा याइफा पाउजल पिजरी धर्म की चनबी अमसुंग हराउ तयामबग लोइनना चैराउबुगी थोरमसी हराउ नुंगाइना पांगथोकप ओइरसनु मुख्यमंत्री युमनाम खेमचान की पाउजल दहाई चैराउबना लाकपदा मणिपुर की मियामदा हराउ नुंगाइना चैराउबुगी थोरम पांगथोकना याइफा पाउजल पिजरी चैराउ कुमैना लाकपदा शांति अमतोइबा साउखुटपा अमसुंग कांगलुप पुमनमकि मरक्ता नुंगसी चानबा अमदि थाजनबगी मरी हेन्ना चसिलहनबा ओइरसनु पाउजल अमदा मणिपुर विधान सभा के अध्यक्ष थोकसोम सैत्यव्रतन हाई अनौबा आसाम लोइनना अनौबा चैराउ तरामना ओक्तुना नुंगा याइफबा अमतोइबा अमसुंग शांतिगी लंबिरोमदा पुन्ना संगसिनमिनरसी तोंगान तोंगान मफमसिंगदा खुंदानिरिबसिंगी वाखलदा अमतोइबगी वाखललोन हेन्ना फाउदुना अखोई पुमनमकि लैफम ओइरिबा मणिपुरबु नुंगसिबगी वाखललोन हेनगतहलसी हाइरि चैराउबना लाकपदा अखोई यारिबा चनबिसिंग ngak senbaga loinana singnabasing mayuknaduna yumthong khudimакта nungai yaiphu purakpa oirasanu hairi MLA Kongkham Robindrana Susajibu Cheraubuna lakpada Manipur gi miyam akhanana mitei singi mafamda yaifa paujel pirakli Manipur Pradesh Congress Committee ki President Okram Ibobina su Sajibu Cheraubu mari lenana Manipur gi miyamda yaifa paujel pirakli Security Force na toan toan wafam singde khusu khulai kyamarum phaгаtle lalhouba ahum su phare Manipur Police Control Room na thadorpa cherol amada hai Kamjong Jila gi Chasat Police Station gi manung chanba border pillar sam taramanga gi area dagi Security Force na magazine jawba AK-47 rifle ani .22 gi rifle ama mortar bomb tarataru RPG round taruk grenade manga tongan tongan ba nongmai sing maru chamri humpu mathoi masung 12 bor कार्टिस तारामरी फंगले कांगपोपी जिला के साइकोल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलाइबा तिंगपी बुंग अमसुंग लेपलैंड विलेज की मरकती सिक्योरिटी फोर्स नंगरांग कंट्री मेट बॉल एक्शन सिंगल बैरल मंगा पंपी अहुम 36 हैंड ग्रेनेड हमा 7.62 mm की नोंगमिमरु अनि अमसुंग रेडियो सेट अनि फंगले अमरमना थौबाल जिला की लिलोंग हाउरीबी मखा लैकाइदगी ngarang security force na KCP ibungo ngangong gi mioi ani fare makhoi ani adu hianglam awang laikaidagi ne masung mioi amadi kaksing gi commando da attest tawduna laiba havildar ni mongondagi maru tara ga loinaba service pistol ama fanglei Assam की होजाई जिला की लंका पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा रूपनागर दगी RPF PLA की मे अमा आसाम पुलिस की मटेंग लोइनना मणिपुर पुलिस नंगरंग फारे महाग जिरीबांग की कमरंगा दगिनी
हौजी हौजिना जिरिबांगी दिबोंग अवांग लेकाइदा लेबनी फारबा मियोय असि मियामदगी नमदुना सेल खाइबदा चेनबा मियोयनी हाइरी मरक असिदा उखरुल जिला की लितान पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलाइबा मोंकोट शेपू विलेज एरिया सारम बंकर मरिंगारांग सिक्योरिटी फोर्स न थुगाइदुना मांगहनख्रे ngasi asi Dr. B.R. Ambedkar gi mapok nimitni Bharat Sanvidan sembada maroiba thodang lawkiba amasung laibak asigi ihan hanba ain mantri suoikiba Dr. Ambedkar buning singduna laibak ki mapum kayada palan thorum sing pangtok nagani Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar gi sama kunthra manga su mapok kumona lakpada Mukhyamantri Yumnam Khyamsana lusingba sig mapamda ikai kumnaba ulagli वारोल अमद मुख्यमंत्री हाई डॉक्टर अंबेडकर भारत संविधान की चीफ आर्किटेक्ट तुंगी मियंग सानब लुसिंग लेबाक अचुम वायल फंगहनब थोंग मानहनब हिंग थाक वांखटहनब होनबदा माकी पुंसी कथोकी खुनाइद हंथन येंग मियंग शिक्षा आइन संविधान की ngaklo kaya सिजनदुना महकना मुथतनब होनरमकी डॉक्टर अंबेडकर की मपोक कुमोना लाकपदा लुसिंगबा सिगी मफमदा थमोय सेंगना इकाई कुमनब उटपग लोइनना महाकी वाखलोन सिंग तुंग इंदुना सखुप खुनायम ओहनब होनरसी हरी डॉक्टर B.R. अंबेडकर की मपोक कुमोना लाकपदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी के शरद कुमार ना आकाशवाणी इम्फालदा असुमना फोंगदोकली ngasi asi laikhidraba भारत की कॉन्स्टिट्यूशन की गार्जियन ने हाइनरिबा दुगुम्बा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चामगा कुंथ्रा मंगा सुब मपोक नुमिनी नुमित असिना लाकपदा बेहा इसागी अमदी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर प्रदेश की माइगी मियामदो याइफे पाउजल पिजरी दुगा लोइनना असिंगबा लुसिंगबसिना अहानबा भारत की लॉ मिनिस्टर मोइना भारत की प्रजा मियाम की सेवा तौबिरमबदा नतना असिंगबा कॉन्स्टिट्यूशन असि महागना मचा खाइना भारत लेरिबा जाति पुनमकपु नुसी चानना लेबि याननबा तिनबा याननबा सेंबिरमबा दुम कॉन्स्टिट्यूशन असि लिपुन्ना ngasi भारत लेरिबा जाति पुनमक असि पुनसिंदुना अमता ओइना कोई चनमिनबगी खोंथा अमनु चलिबा सिगी दमकता अदिखिंबा लुसिंगबा सिबु यामनु सिंथा निंगा वेबगा लोइना थागतचरी केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्रालय की मखादा तोंगान तोंगान स्कीम सिंग मखादा अंगांग सिंगदा सेल की तेंगबांग पीरिबा सिलौंगना हाइरी नॉन जिला की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट न थोकप सेरोल अमदा हाई नॉन जिला की मनुंग लैब सही तरानी पानी मखाद लैब लाइरब स्कूल चलिब महिरोइ सिंगना स्कीम सिंग असि कानब लौब यागनी अकुप मरोल डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नॉन दगी खंगनब यागनी हाइरी ताबिरिब पाउ से आकाशवाणी इम्फाल दगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंगसी लुपा कोटी लिसिंग तरानिथुई संगना सेंगुटकिबा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर संगारगनी प्रधानमंत्री ना उत्तराखंड की देहरादून चतुना इकोनॉमिक कॉरिडोर असिगी अखनब सरुक खरा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर ओइना संगुलिबा सिसु यंगसिनगनी लेन तरुक लेबा किलोमीटर चानी तरहमदोई सांगबा दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर असिना दिल्ली अमसुंग देहरादून की मरक्ता साथोक चसिन तौबदा पुंग तरुक हेना चंगनबदु पुंग अनि मखाइरोम तमक चंगलगनी प्रोजेक्ट असिगी मनुंगदा रेलवे ओवरब्रिज अहुम थोंग मरी अमसुंग अतोप्पा इंफ्रास्ट्रक्चर कया याउरी कॉरिडोर असिदा एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की खुथांगदा मियाम चथोक चसिन तौबदा खुदोंग चाव पीरगनी मफम असिगी बायोडाइवर्सिटी अमदी लमलक की सा उसेक असिंगदा अकाइब पीदनबा एशिया की ख्वाइदगी सांगबा किलोमीटर तरनिथोय की वाइल्ड लाइफ इकोनॉमिक कॉरिडोर अमसु याउरी ngasi phongba pauche sing maroi pau sing dam hauzik khetrimium biros leire biros थागतरी किरण सीएम ने इम्फाल मनुंगी सेंगो सागलिबसिंग येंगसिनखरे असोयबा यावरमबसिंग चुमथोकनबा खंगनखरे हाइबा पाउ संगाई एक्सप्रेस मणिपुरी एडिशन की अहानबा लमाइदा फोंगली पाउचे असिगी इंग्लिश एडिशन दा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन तरा मरीना सेंसस की मतांगदा हाई कोर्ट पेटिशन अमा थारगनी हाइबा पाउ असिना अनिसुबा हेडलाइन तौदुना फोंगली ट्रोंगलाउबी अमसुंग गेलमोलदा लैखिद्रबा अंगांग अनि यावना मियोई मंगागी हक्चांग पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन तौखरे हक्चांग सिंगदी लेंगाका यानबा पुरक्ट्रिबा फावबा लौदुना अरोइबा मथोंग मंगम पांगथोखिरोय हाइबा पाउ हुएलान पाउगी अहानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली पोक्टमफम पाउचेदा इम्फाल की एयरपोर्ट नौना सेंगत सागलिबा टर्मिनल बिल्डिंग मतम चाना लोइसिन्नबा चीफ मिनिस्टरना पाउताक पीखरे हाइबा पाउ असिना अहानबा हेडलाइन तौरी पाउ असि सना लेबाकता तोंगानबा हेडलाइन तौदुना फोंगली अमदी सब हेडिंग दा मोबाइल डाटा थिंगबा हांगलगनी हाइबा सीएम की वाफमसु याउरी मुख्यमंत्री ना असम राइफल्स की DGAR का उनखरे कुकी की संस्थान सिंगना मुख्यमंत्री की खोंगचत चटकनी हाइबा असि यानिंगदबा फोंदोरकली अमसुंग रोड ब्लॉकेट तौखिबना चुराचानपुरदा थाव अमदी LPG की स्टॉक हंथरकले हाइबा पाउ दी पीपल्स क्रॉनिकल की अहानबा अमसुंग अनिसुबा हेडलाइन ओइरी
ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯀ꯭ꯋꯥꯏꯔꯤ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ MCPCR ꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯄꯔꯁꯟ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯤꯞ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯊꯧꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯝ ꯍꯥꯠꯄ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯒꯥꯟꯐ꯭ꯌꯨꯃꯦꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯋꯥꯔꯃꯤꯡ ꯗꯦ 2026 ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯃꯥꯏꯗ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤ ꯃꯤꯍꯥꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯂꯥꯏꯠ ꯚꯤꯖꯤꯜ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯇꯥꯏꯝꯁꯀꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯂꯤ꯫ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯗ ꯐꯣꯡꯕ ꯍꯤꯜꯁ ꯍꯣꯔꯟꯕꯤꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ NPOꯅ ꯃꯥꯎ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤ ꯍꯥꯏꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯕ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯀꯤꯔꯟ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯕꯤꯔꯣꯁ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯉꯁꯤ ꯙꯔꯃꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯖꯤꯕꯨ ꯆꯩꯔꯥꯎꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯐꯥꯒꯠꯂꯦ, ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨ ꯐꯥꯔꯦ, ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯗꯦꯜꯂꯤ ꯗꯦꯍꯔꯥꯗꯨꯟ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯀꯣꯔꯤꯗꯣꯔ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯂꯣꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯦꯂꯩꯕꯝ ꯏꯔꯥꯃꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯗꯒꯤ ꯅꯣꯠ꯫ वृंदावन सखी शिव दुर्गान प्रेम तौरले नीलकांत इबू कंठ रे हंगम द्रव मारी मंशे राधा नीलकांत इबो नीलकंठ रे नंगी नुंशीबा सक्तंदो ननाईदा जोगे यशोर इबो जगत की गोरी नोंशी
thơ nụ lô tu nơ thơm giờ ghê ni lơ can tơ ibung ni lơ can thơ uy bi bre rồi ôi re rồi ôi re Sri Sri Mati Radhikan rồi ôi re rồi ôi re kunja khudi ngang thôi riu ngang thôi riu Sri Sri Mati Sri Sri Mati Radhikan rồi ôi re rồi ôi re Rohinina chensin khiduna ja soda da paudam jai tawda ja soda sen thoktuna jogi amada naika amana sokpa ya ya de haiba khandana jogi bu kolladuna asum haina haire I जसी लाओ जोगी जसी लाओ जोगी जसी लाओ जोगी 이마그 레이루시 이마그 레이루시 파르로 인해 이만하는 아하쿠 저시老조기 까나의 인실리 까나의 인실리 그리기 야루리 그리기 농낭낭 보이리브 시시라우 조기 융통 쿠딩다 융통 쿠딩다 비켜수 니루누 비켜수 니루누 본다수 살루누 본다수 살루누 이마가 레이러시 저시라우 조기 cần hai câu với ít
hai câu bơ ít chagi cần hai câu bơ ít chagi mayamba oiduna mayamba oiduna thamjagini imanana ahaku sasilaw jogi Ichakan haidi, ichakan haidi, gopajati oi bana, gopajati oi bana, chakhine, banda chakhine, banda sansemba jogi, sasilaw jogi. Toli, 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 gopajati oi bana ichagi wakande dehe se mali toli, toli, toli. Nang ba thung jaro jogi imana mangon pidabani nang ba thung jaro jogi matam jana salu ko banda matam jana salu ko banda matam jana matam jana hanjilu ko nangira tau uru bada imagi thamoy kairabani nang naning thung jaro jogi Salaivam Iramani Devi dagi note tabire matangna jogi ves Agashwani Imphal hojig amuk lantok cheri tekjam Gambir Singh na khongba basi
ꯇꯦꯛꯆꯝ ꯒꯝꯚꯤꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯈꯣꯡꯕ ꯕꯥꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ꯫ आकाशवाणी इम्फाल हौजेक दिल्लीदगी रिलेदा समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज अमदी सिलोंगदगी रिलेदा अवांग नोंगपोक की पाव मथंग मथंग ओइना ताबा फंगबिरगनी। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दूसरे चरण के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को अधिसूचित किया। भारत में ईरान के राजदूत ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी लागू की। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। देश आज संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर BR आम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और IPL क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देहरादून से दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वे टिहरी में देश के पहले 1000 मेगावाट क्षमता वाले पंप स्टोरेज प्लांट का भी उद्घाटन करेंगे। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्रों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूत करेगा और पूरे क्षेत्र में व्यापार तथा विकास के नए अवसर उत्पन्न करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये परियोजना उच्च गति की कनेक्टिविटी को पर्यावरणीय स्थिरता और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के साथ अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को दर्शाती है। प्रधानमंत्री आज दोपहर देहरादून में आयोजित एक समारोह में दिल्ली देहरादून आर्थिक कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। लगभग 213 किलोमीटर लंबा ये गलियारा 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में विकसित किया गया है। ये कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है, जिससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा समय वर्तमान 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा। परियोजना के अंतर्गत निर्बाध उच्च गति संपर्क सुनिश्चित करने के लिए 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 4 प्रमुख पुल तथा सड़क किनारे 12 जन सुविधाओं का निर्माण किया गया है। अपने 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरे के दौरान प्रधानमंत्री देहरादून में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल के भाजपा बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दूसरे चरण का स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स अधिसूचित कर दिया है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत निवेश वैकल्पिक निवेश कोष पर केंद्रित होगा। मंत्रालय ने कहा है कि परिचालन दिशा निर्देश और वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कमेटी की संरचना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा जारी की जाएगी। मंत्रालय ने बताया है कि लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI अधिसूचना की तिथि से क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में योजना का संचालन शुरू करेगा। ये योजना देश के नवाचार आधारित विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारण से संबंधित एक याचिका पर केंद्र और अन्य अधिकारियों से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा कृषि लागत और मूल्य आयोग को नोटिस जारी किया है। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फथाली ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने पर भारत सरकार तथा जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। नई दिल्ली में कल शाम पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर फथाली ने इस कठिन समय में सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया। पाकिस्तान में पिछले सप्ताह हुई शांति वार्ता के विफल होने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी शुरू कर दी है। ये नाकाबंदी कल शाम 7:30 बजे से प्रभावी हो गई। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि ये प्रतिबंध फारस और ओमान की खाड़ी में स्थित ईरान के तटीय क्षेत्रों में प्रवेश करने या बाहर निकलने वाले जहाजों पर लागू होंगे।
ईरान ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि वो अपने जल क्षेत्र में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@YR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन। समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी। मास्टर जी, ये किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए। मैं फसल की नहीं एनपीएस पेंशन की बात कर रहा हूँ। एनपीएस पेंशन? हाँ, आज ही एनपीएस में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना बुढ़ापा सुरक्षित करो। बुढ़ापा सुरक्षित? हाँ भाई, एनपीएस भारत सरकार के पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें आज से पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से। बुढ़ापे में पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में आज सुबह डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश में जन्मे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन सामाजिक भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दिया। उन्होंने महिलाओं, मजदूरों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए लगातार काम किया। उनकी सोच और प्रयासों ने एक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज की नींव रखी, जो भारत के संविधान में साफ दिखाई देती है। साथ ही संविधान के निर्माण में भी उनकी अहम भूमिका रही है। डॉक्टर अंबेडकर का योगदान आर्थिक नीतियों, बुनियादी ढांचे और संवैधानिक कानून सहित कई क्षेत्रों में रहा है। इसी वजह से उन्हें एक महान राष्ट्र निर्माता के रूप में भी जाना जाता है, जो एक न्याय संगत और समान भारत बनाने के लिए समर्पित थे। उन्हें उनके योगदान के लिए वर्ष 1990 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज का दिन उनके महान कार्यों, खासकर सामाजिक न्याय, समानता और भारतीय संविधान के निर्माण में उनके योगदान को याद करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आनंद कुमार के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात में गांधीनगर के लोक भवन में अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सामाजिक समरसता महोत्सव में भाग लेंगी। इस कार्यक्रम में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। पंजाब में आज बैसाखी का त्योहार श्रद्धा, उत्साह और भाईचारे की भावना के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। वर्ष 1699 में आज ही के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। एक रिपोर्ट। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। हजारों श्रद्धालु श्री अनंतपुर साहिब में मौजूद गुरुद्वारा तख्त श्री केसगढ़ साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं। यही वह धार्मिक स्थान है जहां सिख पंथ की स्थापना की गई थी। देश भर के गुरुद्वारों में भी खालसा स्थापना दिवस बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। भारत से बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु खालसा साजना दिवस और बैसाखी मनाने के लिए पाकिस्तान में ऐतिहासिक गुरुद्वारों में पहुंचे हैं। यह त्योहार हमारे किसान भाइयों के लिए भी खास है, क्योंकि वे आज से ही अपने खेतों में गेहूं की फसल की कटाई शुरू करते हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर। जम्मू कश्मीर में जम्मू नगर निगम तथा जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर्यटन और सूचना विभागों के समन्वय से 3 दिवसीय स्वच्छ तवी महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। बैसाखी के अवसर पर यह कार्यक्रम चौथे तवी पुल पर आयोजित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ये महोत्सव स्थानीय परंपराओं का जश्न मनाने के साथ साथ भविष्य के लिए तवी नदी को स्वच्छ रखने की वचनबद्धता को भी दर्शाता है। जम्मू नगर निगम ने जम्मू के सभी निवासियों को इस उत्सव में शामिल होने और शहर को और अधिक स्वच्छ व सुंदर बनाने में अपना योगदान देने के लिए आमंत्रित किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से एन गुलशन रैना।
आईपीएल क्रिकेट में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 216 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरे राजस्थान रॉयल्स 159 रन पर ही सिमट गई। सनराइजर्स के लिए प्रफुल्ल हिंगे ने 4 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली हमारी श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज हम महाराष्ट्र के किसान श्री श्रीरंग देववा लाड से बात करेंगे। श्री लाड ने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए काम किया है। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मैंने प्रयोग किया है, कर्नाटक में इंडी गांव है, वहाँ भी मैंने प्रयोग किया, जालना में भी। अभी मुझे मन में कि अनाज के पर जाएंगे, पैसा होना चाहिए, अनाज भी होना चाहिए। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित की जाएगी। इसे आकाशवाणी समाचार के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुना जा सकता है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी भारत, कर्नाटक, केरल और माहे के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। विभाग ने सौराष्ट्र और कच्छ में आज लू चलने की भी संभावना व्यक्त की है। अगले 3-4 दिन में आंध्र प्रदेश, बिहार, तटीय कर्नाटक, गुजरात, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी तथा काराइकाल के कुछ हिस्सों में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद कनक। भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर आज अखबारों ने उन्हें नमन किया है। महिला आरक्षण अधिनियम में संशोधन पर प्रधानमंत्री का बयान लोक सत्य और पंजाब केसरी के पहले पन्ने पर है। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा महिला आरक्षण कानून। लोक सत्य में भी प्रधानमंत्री का वक्तव्य है, महिला आरक्षण 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय। दैनिक जागरण ने हुर्मुज में अमरीकी नाकाबंदी और ईरान के पलटवार को अपनी हेडलाइन बनाया है। जनसत्ता लिखता है, अमेरिका ने होर्मुज समेत ईरान के सभी जलमार्गों की नाकेबंदी की। तेहरान ने फारस और ओमान की खाड़ी के सभी बंदरगाहों को धमकी दी। हिंदुस्तान ने अमेरिका ईरान वार्ता विफल होने पर फिर युद्ध को हवा शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, दुनिया में आर्थिक तनाव का पारा फिर चढ़ने लगा है। विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में फिर उछाल का दौर शुरू हो गया है। भारत में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी हैं। सवाल और गहरा गया है कि भारत तेल की कीमतों को कब तक रोकेगा। नोएडा में वेतन वृद्धि की मांग कर रहे श्रमिकों के प्रदर्शन और तोड़फोड़ को अनेक अखबारों ने अपनी पहली खबर बनाया है। हिंदुस्तान ने इस प्रदर्शन की वजह से फरीदाबाद से दिल्ली, नोएडा तक जाम लगने का समाचार सचित्र दिया है। अमर उजाला लिखता है, श्रमिकों ने किया हिंसक प्रदर्शन, 300 से अधिक कंपनियों में तोड़फोड़, 20 से अधिक गाड़ियां फूकी। देशबंधु की सुर्खी है, नोएडा में 400 फैक्ट्रियों में तोड़फोड़। मौसम विभाग का पूर्वानुमान राजस्थान पत्रिका की प्रमुख खबर है। अल नीनो इफेक्ट, इस साल सामान्य से 8% कम बारिश के आसार। दैनिक भास्कर की टिप्पणी है, तपेगा ज्यादा बरसेगा कम। जून से सितंबर के बीच 92% ही बारिश। दिल्ली से देहरादून अब 2.5 घंटे में। आज पीएम मोदी करेंगे एक्सप्रेस वे की शुरुआत। नवभारत टाइम्स में है। 8 दशक तक देश के संगीत जगत पर राज करने वाली सुविख्यात पार्श्व गायिका आशा भोसले के अंतिम संस्कार का चित्र देते हुए जनसत्ता ने भावुक कर देने वाली पंक्तियां लिखी हैं। अगर मैं रुक गई अभी तो जा ना पाऊंगी कभी, काश। अमर उजाला ने स्वास्थ्य शीर्षक से जानकारी दी है, विटामिन डी की कमी से बढ़ रहा डायबिटीज का जोखिम। एम्स के अध्ययन के हवाले से पत्र लिखता है, 61% मरीजों में विटामिन डी का स्तर बहुत कम मिला। विटामिन डी की कमी होने पर 8 गुना तक बढ़ सकता है डायबिटीज का खतरा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे का उद्घाटन करेंगे। सरकार ने देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कोष के साथ दूसरे चरण के स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स को अधिसूचित किया। भारत में ईरान के राजदूत ने ईरान के संकटकाल में विश्वसनीय और भरोसेमंद सहयोगी होने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों की पूर्ण समुद्री नाकाबंदी लागू की। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा।
देश आज संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और IPL क्रिकेट में कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 57 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News. Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Delhi-Dehradun Economic Corridor in Dehradun, Uttarakhand today. Government notifies Startup India Fund of Funds 2.0 with a corpus of 10,000 crore rupees to boost capital flow into the country's startup ecosystem. Iranian ambassador to India thanks New Delhi for being reliable and compassionate partner in times of hardship. United States Navy enforces full maritime blockade of Iranian ports, escalating tensions in West Asia. Nation pays homage to Chief Architect of Constitution Dr. B.R. Ambedkar on his birth anniversary today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad beat Rajasthan Royals by 57 runs in Hyderabad. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Delhi-Dehradun Economic Corridor from Dehradun today, along with the country's first variable speed pumped storage plant of 1,000 megawatt capacity in Tihri. The corridor will strengthen regional economic growth by enhancing connectivity between major tourism and economic centers and creating opportunities. These are new opportunities for trade and development across the region. Our correspondent reports that the project reflects the Prime Minister's vision of developing next-generation infrastructure that integrates high-speed connectivity with environmental sustainability and an improved quality of life for citizens. There is an atmosphere of enthusiasm in the state ahead of the visit of Prime Minister Narendra Modi, and the state government has completed all the necessary preparations. The Prime Minister will inaugurate the Delhi-Dehradun Economic Corridor at a ceremony this afternoon. Approximately 213 km long, the corridor has been developed at a cost of over 12,000 crore rupees. It passes through Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand and will reduce travel time between Delhi and Dehradun from more than 6 hours at present to about 2.5 hours. The project includes construction of 10 interchanges, 3 railway overbridges, 4 major bridges and 12 roadside public facilities to ensure seamless high-speed connectivity. The corridor has been specially designed to significantly reduce human-wildlife conflict and includes an approximately 12 km long elevated wildlife corridor, one of the longest in Asia. During his one-day visit to Uttarakhand, the Prime Minister will also address a public meeting in Dehradun. Sakshi Singh, Akashvani News, Dehradun. The government has notified the Startup India Fund of Funds 2.0 with a corpus of 10,000 crore rupees to boost capital flow into the country's startup ecosystem. The Ministry of Commerce and Industry said that investments under the scheme will focus on alternative investment funds supporting priority segments, including deep tech startups and early growth stage. It added that the operational guidelines and the composition of the Venture Capital Investment Committee will be issued by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade. The ministry informed that Small Industries Development Bank of India will commence operationalization of the scheme as the implementation agency with effect from the date of notification. Science and Technology Minister Dr. Jitendra Singh said that the Anusandhan National Research Foundation ANRF is developing AI-based platform Saral AI to convert complex research publications into simplified social media content in 18 Indian languages. Reviewing the progress and future roadmap of the ANRF in New Delhi yesterday, Dr. Singh emphasized mission mode research and greater societal impact of scientific innovations. Iranian ambassador to India, Dr. Mohammad Fatali, has thanked the government and people of India for being reliable and compassionate partners in times of hardship. Talking to reporters in New Delhi, Dr. Fatali also thanked the government for facilitating all the necessary arrangements in these difficult times.
Our high-ranking officials believe that we, as Iran and India, have a common interest, and God willing, we have a good relation in the future. And now, in these difficult times, we have a good relation. And I said to you that mentioned that His Excellency Prime Minister of Modi have 2 times talked with Mr. Pezeshkian. We believe that Iran and India common interest and common fate. The United States Navy has begun enforcing a full maritime blockade of Iranian ports, escalating tensions in West Asia after weekend peace talks in Pakistan collapsed without agreement. The operation took effect at 7:30 last evening, with US Central Command stating that the restrictions apply to vessels entering or leaving Iranian coastal areas in the Persian Gulf and the Gulf of Oman. The US has deployed at least 15 naval ships in West Asia, including the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and 11 destroyers, as part of a blockade of Iran's ports. The US military warned that any vessel entering or departing Iranian ports without authorization could face interception, diversion, or capture. We have a report. The move is being seen as a major escalation and a shift towards economic pressure rather than direct military confrontation. The Strait of Hormuz handles roughly 1/5 of global crude oil shipments, making any disruption significant for global energy markets. By restricting Iran's oil exports, Washington appears to be attempting to push Tehran back to negotiations while limiting the risk of full-scale conflict. There are also concerns about retaliatory action by Iran through its regional allies or disruption of other shipping lines. Oil prices have already reacted to the developments, and global markets are closely watching the situation as the blockade of the Strait of Hormuz enters its initial hours. This is Vinod Kumar for Akashwani News from Dubai. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle @AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The nation pays homage to the chief architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, on his 136th birth anniversary today. Several functions have been organised throughout the country to mark the occasion. In New Delhi, a function will be held at Parliament House Complex this morning to pay tributes to Dr. B.R. Ambedkar. More from our correspondent. Born on 14th April 1891 in Madhya Pradesh, Dr. B.R. Ambedkar dedicated his life to the fight against social discrimination and worked tirelessly to secure equal rights for women, laborers, and marginalized communities. His vision laid the foundation for a just and inclusive society, as reflected in the Constitution of India, which he was instrumental in drafting. Dr. Ambedkar's multifaceted contribution from economic policy and infrastructure to constitutional law cemented his legacy as a nation builder committed to fostering a just and equitable India. Dr. Ambedkar was posthumously honored with Bharat Ratna in year 1990. This day holds great significance in honoring his remarkable contributions, particularly in the fields of social justice, equality, and the drafting of the Indian Constitution. With Anand Kumar, Sakleen Akhtar, Akashwani News, Delhi. President Draupadi Murmu has extended her greetings to the citizens on the occasion of the birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. In her message, the President paid tribute to Dr. Ambedkar, pointing that he was a jurist, economist, profound thinker, legal scholar, and a strong advocate of an egalitarian social system. The President will participate in the Samajik Samarsata Mahotsav at Lok Bhavan in Gandhinagar today to mark the birth anniversary of Dr. Ambedkar. The festival of Baisakhi is being celebrated in Punjab today with devotion, enthusiasm, and brotherhood. The occasion has a religious, cultural, and historical value. It was on this day the Khalsa Panth was founded by the 10th Guru, Sri Guru Gobind Singh Ji, in the year 1699. More from our correspondent. वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला. Thousands of devotees are paying obeisance at Gurdwara Takasri Kesgarh Sahib, located in Sri
Anandpur Sahib, where the Khalsa Panth was founded. Divine Gurbani Kirtan is also being performed by Kirtani Jathas here and in Gurdwaras across the nation. A large number of Sikh devotees are also visiting the historic Gurdwaras in Pakistan to celebrate Khalsa Sajna Divas, the birth anniversary of the Khalsa Panth, and Baisakhi as well. The festival also has a significance for our brothers from the farming community as they start harvesting their wheat crop in their farms from today. Rajesh Bali, Akashvani News, Jalandhar. Tamil New Year's begins today with the birth of Chittirai. Our correspondent reports that today's New Year is based on the solar calendar, which rings in a good sunny season, harmonious for the good harvest and great beginnings. Festival means happiness, cheer and sumptuous food. Today people visit temples making a plea for their success in new ventures. Tasty traditional breakfast with idli, vada, payasam followed by a 6-taste meal for lunch at home in banana leaves are specials. Mangoes, drumsticks, neem flowers are used in today's recipes. Mango leaf festoons and a beautiful rangoli welcome the guests in every home. Joy, Akashwani reporting from Chennai. Uttar Pradesh Labour Minister Anil Rajbhar has termed the violence in Noida as a well-planned conspiracy. He said that in recent days, 4 suspected terrorists have been arrested from Meerut and Noida whose links were connected to handlers based in Pakistan. In such a situation, the possibility of a conspiracy to create instability in the state gains strength. On the other hand, the state government has also clarified that it is false information that the wage board has decided 20,000 rupees as minimum wage and the industries in Noida are not following it. In IPL cricket, an explosive 91 by skipper Ishan Kishan and 4-wicket hauls from debutants Praful Hinge and Saqib Hussain helped Sunrisers Hyderabad beat Rajasthan Royals by 57 runs at Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad. Put to bat first, Sunrisers Hyderabad posted 216 for the loss of 6 wickets in the stipulated 20 overs. During the chase of 217 runs, Rajasthan Royals' top order was ripped apart in the first over by debutant Praful, who took 4 wickets, and Rajasthan Royals were left hopeless at 9 for 5 wickets. Praful Hinge was declared player of the match. The southwest monsoon seasonal rainfall from June to September is expected to be below normal this year. Briefing media in New Delhi, Director General of India Meteorological Department Dr. Mrityunjay Mohapatra said that the seasonal rainfall over the country is likely to be 92% of long period average with a model error of plus minus 5%. He said that weak La Nina conditions are currently transitioning to El Nino Southern Oscillation neutral conditions over the equatorial Pacific. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal. Thank you, Sunil. News related to the West Asia conflict continues to dominate front pages of dailies. Trump blocks traffic to Iranian ports as Tehran threatens to target U.S. Gulf allies. Headlines The Tribune. Oil prices climbed back over $100 a barrel with no sign of a swift reopening of the Strait of Hormuz, writes the Indian Express. The top headline in the Pioneer reads, Wage protests turn violent spread across NCR. The news item mentions that the violence paralyzed traffic, leaving thousands of commuters stranded with long queues of vehicles stretching for several kilometers seen at the Delhi-Noida border. In its editorial piece titled Asha Bhosle's Legacy Endures, the Asian Age pays tribute to Asha Bhosle as a singular and enduring force in Indian music whose artistry, versatility and resilience ensured her place far beyond comparisons with her contemporaries. The piece argues that although she emerged in an era dominated by other great female voices, she built an extraordinary body of work across generations of composers. It also suggests that market preferences may at times have limited the full extent of opportunities she deserved, making her achievement even more remarkable and her legacy all the more lasting. And finally, an article in the Times of India mentions how B.R. Ambedkar, through his life, ideas and fight against caste oppression, has become a powerful symbol of hope and resistance of Hungary's oppressed Roma community, especially through a school in Miskolc.
named after him. And with that, it's back to you, Sunil. Thank you, Nina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to inaugurate Delhi-Dehradun Economic Corridor in Dehradun, Uttarakhand today. Government notifies Startup India Fund of Funds 2.0 with a corpus of 10,000 crore rupees to boost capital flow into the country's startup ecosystem. Iranian ambassador to India thanks New Delhi for being reliable and compassionate partner in times of hardship. United States Navy enforces full maritime blockade of Iranian ports, escalating tensions in West Asia. Nation pays homage to Chief Architect of Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, on his birth anniversary today. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad beat Rajasthan Royals by 57 runs in Hyderabad. And with that, we end the morning news. Have a nice day. आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। This is Akashvani Shillong, the Northeast News Bulletin, read by Deme Bandabla. The headlines. Mizoram State Election Department commences home voting for Aizawl Municipal Corporation elections. Tripura State Election Commission orders repoll in 2 booths for Tribal Areas Autonomous District Council on 16th of April. Security forces arrest 3 militants from different insurgent outfits in Manipur. Bihu celebrations begin on occasion Chaitra Sankranti, marking the end of the Bengali and Assamese New Year's today. Now for the news in details. The Mizoram State Election Department has commenced home voting initiative for the 19-member Aizawl Municipal Corporation elections. The move is to enable over 2,700 elderly citizens, individuals with chronic illnesses and persons with disabilities to cast their votes from the comfort of their homes. The special voting arrangement, which started early this morning, will continue until Thursday, the election department said. Home voting is being conducted across 19 Aizawl Municipal Corporation awards. A total of 68 candidates, including 28 women, are in the fray for the municipal polls. Polling for the urban body will be held on 21st and counting of votes will take place on the 27th of April. The ZPM, MNF and Congress have fielded 19 candidates each, while the BJP nominated 11 candidates. The Tripura State Election Commission has annulled polling in 2 booths under the 10 Kulai Champahar ST constituency of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council and ordered a repoll on 16th April. The affected polling stations are 3 Bhatti Maidan SB School and 17 Ramdev Thakur Para. The decision was taken after reports from the district election officer, returning officer and other poll officials pointed to irregularities during voting hours on 12th of April. Fresh polling will be conducted from 7 a.m. to 4 p.m. on the scheduled date. Officials said additional security measures would be put in place to ensure smooth conduct of voting. Security forces arrested 3 militants from different insurgent outfits and dismantled 4 illegally constructed bunkers in separate operations in Manipur yesterday. Assisted by the Assam police, the Manipur police captured a militant belonging to the People's Liberation Army and its sister outfit, Revolutionary People's Front, from Rupnagar in Hojai district of Assam. The arrested antisocial resident of Kamranga in Jiribam joining southern Assam was an extortionist. 2 residents of Hayanglam Awanglekai from Lilong village in Taubal district who were actively working for the Kangla Communist Party were also arrested. Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang chaired a high-level meeting yesterday at Saman Bhavan to review arrangements for the proposed visit of Prime Minister Narendra Modi later this month. The Prime Minister's visit is expected to coincide with the closing ceremony of Sikkim's 50th statehood anniversary, marking 5 decades since Sikkim became part of the Indian Union. The Chief Minister emphasized the importance of seamless
triggered departmental coordination and directed all concerned departments to ensure the timely execution of responsibilities. The meeting also reviewed projects that are likely to be inaugurated or have their foundation stones laid during the PM's visit to Sikkim. Manipur Chief Minister Yumnam Kemchan Singh visited Imphal International Airport and took stock of the ongoing construction work of a new integrated terminal building yesterday. He was briefed by Airports Authority of India officials on the work progress and current status of the construction. Mr. Kemchan Singh assured that the state government would extend all possible assistance for timely completion of the construction work. He also inspected the status of the existing air cargo terminal at the airport. The MY Bharat Budget Quest 2026 Northeastern Region, organized by Mera Yuva Bharat under the Union Ministry of Youth Affairs and Sports, concluded in Shillong yesterday. Union Minister of Youth Affairs and Sports Mansukh Madhavya held a virtual interaction with the youth and encouraged them to actively engage in nation-building, policy discussion and innovation-driven development. Meghalaya Minister of Sports and Youth Affairs, Wailat Miki Chilla, highlighted the state government's commitment to youth development, including dedicated budgetary allocations for youth-centric initiatives. A new study led by researchers from Nagaland University has identified anti-cancer potential of traditional herbal formulation used by the Konyak Naga tribe. Researchers analyzed a 5-plant formulation long used in indigenous medicine and found that its bioactive compounds can target VEGFR2, a protein responsible for the growth of blood vessels in tumors. Assistant Professor Department of Forestry, Nagaland University, G. Bhupesh, noted that the study highlights the value of indigenous medicinal practices and their potential in offering new pathways for natural and cost-effective drug development. Nagaland Chief Minister Nefirio has underscored the vital role of rural libraries in promoting literacy and fostering community development across the state. He stated that rural libraries under the State Department of Art and Culture continue to serve as important platforms for expanding educational access by providing books, learning spaces, and digital infrastructure. Mr. Rio noted that the rural libraries operated by NGOs, student bodies, and community organizations play a key role in extending educational resources to remote and undeserved areas. The Raja Ram Mohan Roy Library Foundation supports these rural libraries by providing books and infrastructure across Nagaland. Nagaland has achieved nearly 95% household tap water coverage under Jal Jeevan Mission as of 1st April 2026. This was informed by the State Public Health Engineering Department during a review meeting with Governor Nand Kishore Yadav yesterday. Officials said over 3.45 lakh households across Nagaland have been connected under the mission, adding that certain blocks have already achieved 100% functional household tap connections. Further, 1,258 villages in the state, or 88%, have been declared open defecation free plus under Swachh Bharat Mission Grameen. Nagaland Governor Yadav highlighted key challenges such as depleting water sources, funding constraints, and maintenance issues. He stressed the need for sustainable water management, timely implementation of projects, and stronger community participation. The Northeast Frontier Railway has developed a new Bihu Toli, a cultural ground for celebrating Bihu and other important events at Malegaon, named Zubin Garg Railway Bihu Toli. The Bihu Toli has been developed with various modern facilities, including a permanent stage area, dining hall, toilet complex, community space, boundary wall, and an all-weather ground. The newly developed ground is set to host the annual Rangoli Bihu celebrations organized by Pandu Bihu Sanmilani from 14th to 17th of April. The initiative underscores Northeast Frontier Railway's commitment to celebrating regional, cultural, and honoring icons who have made significant contributions to society. In Manipur, the Cheroba Festival, the Lunar New Year Day of Meitei calendar, is being celebrated. Married women visit their
paternal homes and exchange gifts with family members. People visit the nearest hillocks and offer prayers to the local deity. Bihu celebrations have begun in Assam and other regions in the northeast today to usher in the new year tomorrow. Chaitra Sankranti is being celebrated today, marking the year end. Traditional cultural programs are being held to mark the occasion. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu yesterday flagged in the felicitated the state contingent that participated in the first Khelo India Tribal Games 2026 held in Raipur, Chhattisgarh. Arunachal Pradesh secured 5th position among 30 states and union territories while emerging as the best performing state from the Northeast. And with that, we end the Northeast News Bulletin from Akashvani Shillong. Have a nice day. Tongan-tonganba thauram kaya lanthokhtuna tanjariba asi nungairaba thauram kayana leichal oiduna semjaba Akashwani Imphal ki Kangla channel ni Hauzik pungpham asida puduna lakchari nungairaba Manipuri film isai sing Khudol gi hanbada tabirasi Aidi thamoi pikre film asidagi Sadananda James Arvin Tinku amadi Pushparani apunba khonjelda Homen Diwaina sairingba amadi Tony Ahibamna Sairangba isai. Cheirawa numit hinjang hauni mathil mathil Cheirawa numit hinjang hauni mathil mathil Utti thongba pakora thongba mathil suna lang siko Utti thongba da uyen hapakau niko Kopi sak da yong chak hapakau niko Oyong chak maru Tumba Yong chak maru Adi adi ba Cheiraw banuming henjang hawi mathil mathil Cheiraw banuming henjang hawi mathil mathil Ay no fangin chong Uti thong da sar na tik boy na hay do Untay tay Yung say sara di kam ba Ado di chadre da na Cheiraw banuming henjang hawi mathil mathil Cheiraw banuming henjang hawi mathil mathil Khâu jeng nhau na cha sen ge mathil lu koi mayam se lem han badi ya de nung shit ka nim ka jo
ꯊꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯕꯦꯝꯃ ꯍꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯊꯋꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯃꯕꯨꯡꯉꯣ ꯍꯣ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯩ ꯑꯊꯣꯏꯕꯤ ꯄꯨꯝꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯕꯤ ꯅꯪꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯩ ꯑꯊꯣꯏꯕ ꯄꯨꯝꯍꯦꯟ ꯍꯦꯟꯕ ꯅꯪꯅꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯃꯊꯣꯏ ꯀꯥꯎꯔꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯡꯍꯧꯔꯕ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗꯝꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯅꯤꯗ ꯊꯥꯕꯜꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯁꯤ ꯍꯥ ꯊꯥꯕꯜꯗꯨꯝ ꯆꯣꯡꯁꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯆꯥꯔꯤꯉꯩ ꯅꯈꯨꯠ ꯁꯝꯅꯔꯣ ꯆꯣꯡꯕ ꯍꯧꯔꯁꯤ ꯆꯣꯡꯁꯤ 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 ꯑꯣ ꯇꯥꯁꯧ ꯈꯨꯠꯇ ꯏꯇꯩ ꯃꯅꯥ ꯄꯥꯏ 이때 그때 있지는 못봐요 Jonesy, 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 Jonesy. ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯖꯦꯝꯁ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝꯒꯤ ꯅꯥꯏꯇꯣꯝ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯍꯣꯃꯦꯟ ꯗꯤꯋꯥꯏꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯣꯅꯤ ꯑꯍꯩꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤल्म ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩ ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟꯗ ꯀꯨꯝꯂꯒꯦ ꯑꯄꯣꯛ ꯄꯨꯔꯥꯟ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯌꯨꯝꯂꯦꯞ ꯆꯥꯔ ꯇꯝꯂꯨꯔꯒꯦ ꯈꯨꯃꯟ ꯌꯦꯛꯀꯤ ꯄꯨꯔꯦꯝꯕꯒꯤ ꯇꯥꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯨꯔꯒꯦ ꯑꯣꯏꯊꯔꯩ 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 ꯑꯩꯅ ꯃꯤꯔꯝꯂꯦꯟꯗ ꯀꯨꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯎꯃꯪꯂꯥꯏ 864ꯅ ꯈꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯇꯣꯔꯕꯨꯡꯗ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯩ ꯇꯔꯦ ꯁꯥꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯒꯤ ꯐꯪꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯎꯗꯣ ꯆꯥꯎꯕ ꯅꯣꯡꯊꯣꯟꯁꯤ ꯎ ꯄꯨꯡꯂꯦꯟꯁꯤ ꯎ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯁꯤ ꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯔꯦꯝꯕꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤ ꯎꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯉꯝꯍꯜꯂꯨ Puremba chikoi, ha ha, chikoi chikoi, ha ha, puremba chikoi, ha ha, chikoi chikoi, ha ha, puremba chikoi. Haina, miramlen sidi mo ama tauramlena. Aisu kaibum kumai yawnena ba, saiwam taurage. Hayum. Câu giàu mà nó thầm bầu nì ha, ôm chim mà nó thập bi nì ha, haram mà nó kỳ hồn nì ha, âm bồ lê hay nâu nì ha, cha lê đi cầm phôi nì ha, hồi đông mà nó chung ông nì ha, mà nó cho mà nó chăm pra nì ha, trên mà nàng mà nó ban na nì ha. Let's try. Foreign God. Foreign God. Foreign God. Foreign God. Foreign car से तब लब खाओगे होलोन की मक्खोल खोंगे Foreign car से तब लब खाओगे होलोन की मक्खोल खोंगे थोंनाव तगी हाई फेटन यिंगलम ये से सरिसो थोंनाव तगी हाई फेटन यिंगलम ये से सरिसो नु जाकना नो लेप कदबा इमांगा नु जाकना नो लेप कदबा इमांगा Foreign car ipakta hijau kongduna aigi nungsibiga koiba chatpada baklava ipakta hijau kongduna aigi janabiga koiba chatpada aigi nungsibi ising kahore aigi janabi
uyana jaraba Isa-isana Onusina jaba Isa-isana uyana jaraba Akhlaman singna Haiba inde khaina Akhlaman singna Apa inde khaina Ek khaido piba Kanagit hamoy na pinbangam gani Kanagit hamoy na kangangam gani ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯐꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯣꯔꯤ ꯁꯦꯟꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯕ꯭ꯂꯨꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Lira lira fajabase ay kaktani Kuira kuira nagtokpaso ay tani Nung si may tupang jabaso ay kaktani Tamay mapachumbaso ay kaktani Lira lira fajabase ay kaktani Kuira kuira nagtokpaso ay tani Nung si mapachumbaso ay kaktani Nung si may tupang jabaso ay tani Fajabi lagtay ng tani Laibog fobo matsanay ni Tamoy may kumhandog doon na Nang mulat po ay ramdiman ni Lai ba farisi ay shu amani Kay da bulolugi Kaurang na lairi ay Konjil thok na hai jau Nung shi ha na hai jau Nang ma
ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯂꯤꯁꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯒꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯨꯕꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ Su chân je khi